Assalamualaikum students. Here we are going to discuss important questions from Bohr energy equation, the equation which is used for the calculation of energy of electron in a particular orbit. So, as we know the Bohr equation that the total energy of an electron, and we should keep in mind students that total energy is actually the sum of kinetic energy and potential energy of an electron in a particular orbit. As you have derived the equation that the equation which is used to calculate kinetic energy, and then we have to derive the equation used to determine the potential energy, and then by adding the two equations we can derive an equation which is used for the calculation of total energy of an electron, and the total energy of a nucleus bound electron is always negative because it is the amount of energy which has been released due to the attraction between electron and the nucleus. So that's why it is the total energy of an electron is always negative when it is bounded to a nucleus, when it is present in a particular orbit. So the total energy equation for the Bohr radius for the electron in the particular orbit is minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 joule z square divided by n square. It is atomic number and n is the orbit number in which the electron is present. So if you convert the joule into electron volt, so we should know that 1 joule is equal to 6.242 into 10 raised to the power 18 electron volt. It is another unit for energy. So if you want to convert the total energy into electron volt instead of joule, so minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18, we will multiply it by this number 6.242 into 10 raised to the power 18 electron volt, because this electron volt is present in how much? In 1 joule. Z square divided by n square. So 10 raised to the power 18 minus 10, ये 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 18 और प्लस 18 ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर हम माइनस 2.18 को 6.242 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 13.6 EV. EV means electron volt. So it is the simplest form of this equation. If you write 1 kg or 1000 gram, so both are equal with different units. Kg is larger unit and electron gram is smaller unit. So in the same way we can write electron volt instead of joule in this form, minus 13.6 electron volt z square divided by n square. So simply by putting the value of z and the value of n in which electron is present in the orbit in which the energy of electron has to be determined, we will put all these taking the square multiply by minus 13.6 electron volt, and we can determine the total energy of that electron in which unit? In EV, electron volt. So the energy, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो स्टूडेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? ऑफ हाइड्रोजन इज डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में है तो जब इसका जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हो तो हमको पता है दैट इज 1s1. So when electron is present in its first shell, it is called the ground state. But when electron is excited from lower to upper state, so first के बाद obviously कौन सा shell रहता है? Second shell. तो second shell actually it is the first excited state of hydrogen atom. Second shell का मतलब क्या है कि जब electron ground state से first shell को प्रोमोट होता है तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के पास जो सेकंड शेल है वो इसका डेफिनेटली क्या होगा? सेकंड एक्साइटेड, ये सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक्चुअली क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक्चुअली क्या है? द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो एज n इज इक्वल टू 1, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट. सो n इज इक्वल टू 2 इज एक्चुअली द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. So total energy is equal to minus 13.6 EV z square divided by n square. तो z square यहाँ पर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है? 1 है, तो डेफिनेटली 1 का स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर लेंगे. सो माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा. और माइनस 13.6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट में जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन एटम का, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगी? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एक्चुअली स्टूडेंट ये माइनस 13.6 से एनर्जी कहाँ भी आ गई है? माइनस 3.4.
So decrease in negative actually means increase in energy, because if you want to excite electron, you have to overcome the nuclear attraction, and to overcome the nuclear attraction certain amount of energy is given, and due to the absorption of energy, the total energy is being increased from minus 13.6 to minus 3.4 electron volt. So it means the total energy of electron in which orbit? In second orbit, which is the first excited state. ऑर्बिट इज डैश टाइम्स डैश देन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 है, तो ये डिवाइड है, लेकिन एक्चुअली एनर्जी यहाँ पर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स मोर देन what? Then the first orbit of hydrogen atom. It means that when electron go away from the nucleus, so we have to give certain amount of energy, due to which the total energy of electron will goes on increasing. So अगर electron की energy, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में गया है, तो इसकी एनर्जी कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि n स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में है, तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लेकिन स्टूडेंट ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू में कम होने का मतलब एक्चुअली क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। सो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट को जाता है, अगर ये थर्ड ऑर्बिट होगा तो ऑब्वियसली फिर माइनस 13.6 डिवाइड बाय क्या होगा? 9 होगा, तो 9 टाइम्स